Namaskar and good evening. I am Anandi Lala, and today I would love to welcome you all on our powerful live session on Facebook. So, firstly, I would like to thank everyone who has been rigorously writing to us, suggesting to us that what our live sessions should be about. Now, we have received quite a lot of inquiry for this particular topic because it is very concerning for parents if their children are not eating well and they are falling sick frequently. So, today you will discover the proven effective ancient solutions for low appetite in children. So I would like to first introduce you to Dr. Smita Naram, co-founder of Ayush Shakti Ayurved, chain of Ayurvedic medicines and Ayurveda therapy clinics. She's also a trainer and an author. She has treated more than 1 million people along with her expert team of doctors at Ayush Shakti throughout the globe in the past 32 years. So namaskar and welcome Dr. Smita. Please enlighten our audiences with your knowledge. Namaskar, namaskar. And I'm so happy to be with you today. I will be actually talking, or rather we all will be talking in Hindi and English, two languages, because this problem of low appetite is more common in India than European or American countries. And I know we have people watching from all over the world. So that's why I'll be talking in both the languages. The reason is कि उस देशों में ठंड रहती है और उस देशों में infections कम होता है. While in our country the climate is very humid and we have very frequent infections in children because of the hygiene conditions जो है वो हमारे यहाँ वायरल इन्फेक्शन जल्दी से फैलता है और मैं तो जनरल वायरल की बात कर रही हूँ एक्चुअली. और हमारे यहाँ जो है कि बच्चे जब बीमार होते तो फिर भी हम उनको एलोपैथिक दवाई दे करके स्कूल में भेज देते, तो उसकी वजह से वो स्कूल में भी फैलते रहता है बच्चों में. वाइल यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका में ऐसा है कि यदि किसी को फीवर आया, बीमार हुए, तो वो जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं. सो इसकी वजह से वो नेचुरली रिकवर हो जाते हैं और बाकी बच्चों में फैलता नहीं है. सो मैं आज आपको रियल स्टोरी बताती हूँ पहले कि होता क्या है ये, व्हाट इज दैट साइकिल यू नो which happens in the children, which is creating low appetite and it becomes very, very chronic. So basically it is beginning generally with a infection in the children. And whenever there is an infection, it is said and statistically known that 95% of the infections are viral. Okay? यानी कि 95% infections जो है वो viral है और करीब 5% इन्फेक्शन होते हैं जो बैक्टीरियल होते हैं. बैक्टीरियल यानी स्टेफिलोकोका या इस टाइप के बैक्टीरियाज वाले. तो गुड न्यूज ये है कि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो एक्चुअली एंटीबायोटिक से तो कंट्रोल होते ही नहीं है, वो हमारा शरीर ही इम्यून सिस्टम से कंट्रोल कर लेता है. सो 95% चिल्ड्रन के इन्फेक्शंस खुद ही कंट्रोल हो जाते हैं. लेकिन हमारा ऐसा होता है कि हम एज अ पेरेंट वी गेट रियली पैनिक व्हेन द चाइल्ड्स फीवर गोज हाई अप टू 104 एंड ऑल, एंड वी जस्ट immediately try to suppress the fever. So fever, you do some medication to bring down the fever, but then sometimes out of this anxiety we also tend to give antibiotics thinking that this can be bacterial or something, or just in general just give antibiotic. And then there is a cycle where antibiotics is killing the immune system down. It is actually also what it does is killing the immune system down, and it also kills the appetite because it is known that antibiotics has a very bad impact on gut flora, which means हमारे अंदर की जो सिस्टम है, अंदर की जो नेचुरल बैक्टीरिया जो हमें पसंद है, जो हमें काम के है, जिससे हमें भूख लगती है, हमारा डाइजेशन सही होता है, वो एक्चुअली खत्म हो जाता है.
वो फिर आप कितना भी आप लॉट ऑफ टाइम्स वी ट्राई टू टेक प्रोबायोटिक्स एंड डिफरेंट थिंग्स, बट वो नेचुरल तरीके से वो रिकवर नहीं होता जल्दी से। तो उसकी वजह से वो एपेटाइट फीवर जाने के बाद भी कई दिनों तक एपेटाइट पूरा डाउन रहता है। बच्चा कितना भी कोशिश करो खाना खाता ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अरे तू तो बीमार हो गया, थक गया, तुझे तो खाना ही चाहिए, नहीं तो बीमार और होगा, वीक हो जाएगा। तो हम ठुसाते, हम उसे टीवी दिखाते हैं, हम स्टोरीज बोलते हैं, और उसको जो है खाना उसके मुंह में ठुसाते, लिटरली यही सही वर्ड्स है, क्योंकि उसको नहीं इच्छा है फिर भी हम उसको खिलाते रहते। तो उसकी जो हजम करने की क्षमता है नहीं, उसको भूख है नहीं, और खिलाओ तो फिर वो पेट उसको हैंडल नहीं कर पाता, और फिर टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, उससे फिर और भूख मर जाती है। तो उस तरीके से ये एक ऐसी साइकिल बन जाती है जिसमें कि 4-6 महीने के बाद वापस फीवर आए, इम्यून सिस्टम तो वीक ही है इसीलिए फीवर आता है, फिर वापस वही हाई फीवर, एंटीबायोटिक, एपेटाइट किल्ड, not feeling like eating, usko forcefully you give something to eat, and the child is literally killing the appetite for weeks and weeks. मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। गौरी नाम की एक लड़की है। ये लड़की हमारे पास आती थी जब उसकी उम्र कुछ 4 साल की थी, तब आई थी, और उसकी हाइट वेट वगैरह ओनली 2.5 years जैसा, क्योंकि जो 1-1.5 साल की उम्र से उसको हर 4 to 6 weeks she used to get the fever, and it went 104 straight away. So they would give antibiotics, whatever doctors suggested they gave it, but never worked on improving and boosting the immune system and make her stronger. So that recurring infection kept on coming back and coming back and coming back. क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना करो तो इन्फेक्शन तो आते ही रहेगा, क्योंकि बाकी की दवाइयां जो है वो तो उसे किल करती है पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करती। तो उस तरीके से ये खाना ही नहीं खाए और थोड़ी सी भूख जैसे ही पैदा हुए वापस इन्फेक्शन आके अगले 2-3 हफ्ते तक भूख मर जाए, तो उस तरीके से उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा था। एंड वो मेरे पास जब आए तो मैंने पहले तो, बिकॉज इम्यून सिस्टम जब अच्छी करनी है तो उसको कफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेट में जब कफ भरा रहता है या नाक में और सब जगह पे कफ भरा रहता है तो उसको इतना भारी भारी जैसे फुल फीलिंग होती है, यानी दे फील लिटरली फुल इन देयर स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, and because of that they don't want to eat anymore, there's no appetite then. So I told them stop wheat and milk products completely, and they were so sincere. I was impressed. For 1 year they didn't give any wheat and milk products. I just guided them everything and they did it. After that I started with the Kafano syrup, D-Virus syrup, Suvarnaprashan drops, actually just once a month to boost her immune system, and few things like Lipton syrup just to boost her appetite. Just with these simple things and a little dietary advice that I gave her, in 1 year she actually not only had a great appetite, her fever slowly, which was coming every 4 to 6 weeks, first it came after 2 to 3 months, then after 6 months, and after a year it almost came only occasionally. And she grew, she picked up in her growth ka jo chart. There is always a growth chart. In that growth chart she picked up in a 1 year's time and became like her age children. After that I stopped everything and I told her that just keep taking Sumedaprashan drops once a month, which is just few drops once a month, that's it. And if she has fever, give only D-Viro and Kafano syrup along with whatever medication your doctor gives, no problem, so that her immune system is boosted, and that's how she's completely all right now. It's like I believe it is 10 years and she's grown very well, very smart girl, very scholaring, clever in her studies, and she's not getting any disturbance because of the fever in her
studies while other children in the class are always getting ill. So that's what Ayurveda does. It will fix your problem from the root. It gives you long lasting relief so that you are not dependent on medication and you will become strong enough to fight it out yourself. So this is Ayushati's approach, as I told you. Boost immune system and improve appetite. That's Ayushati's approach. Yeah. That's wonderful, Dr. Smita. Thank you so much. So, friends, you can not only ask us questions related to low appetite in children, but also about other illnesses and in our comment section down. And our expert doctors will definitely share their knowledge on the various questions that you might have related to other illnesses. So today, we also have Dr. Pranav Gujrati with us, who's an expert Ayush Shakti doctor and a practitioner. He has treated more than 1.5 lakh people across the globe. He's also trained a lot of Ayurveda practitioners successfully, and he's successfully practicing Ayurveda since the last 10 years. So namaskar and welcome, Dr. Pranav. Please share your real life stories with our viewers today and the diet recommendations and herbal recommendations that you had suggested your clients. Yeah. Hello, everyone. I am Dr. Pranav Gujrati. So I would like to share with you one case. One 8-year girl came to our clinic 1 year back with the parents brought them, and they were having a complaint that the child doesn't eat properly and she doesn't grow as her according to her age. So we just saw what was the history was. So we found a very interesting story in it, that her mother was constantly feeding her. Like every 3 hours, she used to feed her something. हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को देते थे. So what used to happen is, whenever there was the time of having a lunch or dinner, the child was actually full. So the parents used to think that the child is not eating properly. So they used to, the child used to tell that I don't like having anything. Instead of giving me roti, chapati, you can either give me some fruits. So they used to think, okay, अगर कुछ नहीं खा रहे तो चलो कम से कम fruit ही खा ले. Then afterwards it happened like that, that she started telling that, okay, I don't want now fruits also. I want something like chips. I want something like chocolates. So this happened, and it got increasing. The frequency increased, and the junk food increased. So what happened is, from all the vegetables and all the chapatis and all got slowly and steadily vanished from her diet, and all it converted into junk food, all the chocolates and all those stuff. They used to give her very nutritious diets as well, like cashew nuts, almonds, and frequently milk consumption was there, thinking that the child is not eating properly, so we should give them nutritious food. But the fact of the matter is, this all resulted in another pathology, or it all manifested into worms. So she was having the symptom of this bloating of the stomach. She was having pain in the stomach. She was having diarrhea. So she was not getting any, she was not gaining any weight. So what we did is, after seeing all her history, we just cut off all her junk food, and we told her strictly that not to give her food unless and until she is hungry. We gave her some diet restrictions. The diet restrictions was to fully vanish all the junk food, all the milk products, the wheat products, the contained foods, the cold drink, ice cream, all those stuffs were eliminated from her diet. And all the fresh foods or the foods that is homemade was advised to her. One which is very light to digest, the food that is homemade, like you can have moong dal khichdi or veggies,
anything that is homemade can be given. That's absolutely no problem. And the highly nutritious diet like almonds, and we feel like very nutritious, but at the same time, it is very heavy to digest. So until and unless the digestive fire gets increased, it's not advisable to give those stuffs. So we just started with Ayushakti herbs. We started with the strict Ayushakti scientific diet, and within few days, all her symptoms related with the stomach ailments got reduced. Her diet increased, and only during the lunch and in the dinner and in between, like for breakfast, she used to have the food. So afterwards, she used to ask for food that मुझे अभी भूख लगी है मुझे खाना दो, and she used to eat whatever was given to her, and all the tantrums and all was vanished. सारे मतलब नखरे जो है वो खत्म हो गए, क्योंकि उसे एक्चुअल में भूख लग रही थी, पहले भूख ही नहीं लग रही थी. So this is how it works. And in Ayushakti, we have some very scientific and very effective herbs which we usually advised in such conditions. There is one known as Supachak Churna that we advise. There is another which is known as Child Care Asav. This asav is very helpful in increasing the digestive fire. We need to just see that what is the reason for not eating properly. It might be an infection, it might be worms, or it might be frequently feeding, because it also decreases the digestive fire. So child care asav is a very fantastic herb, or asav you can say. The Supachak Churna is there. Suyog we usually give for the worms, and Luton for increasing the liver function. This all herbs, along with some, you can say that due to this lockdown period also, many of the people are just stuck in their homes, no physical activity as such, or you can say that due to mobile phones or laptops or TV, the child is just stuck to the laptops or to the mobile phones. So they don't have really physical activity as such. So we need to encourage them to do some physical activity, to engage in some sports or something like that, so they can have this physical activity so that their metabolism increases, and whatever toxins are there in their body, that can be removed from the body. So this is how it works. The Luton is a very fantastic herb which will improve the function of the liver. And one very important, the asav, child care asav. This is a very fantastic asav which helps in increasing the digestive fire. Along with that, some asanas are there which can be advised, like Surya. That is a very common, everyone knows it, how to do. It's some or the other way you have to engage your child in some or other sports or exercise. This will help in the long run as well for having a physical and mental health. Thank you. Absolutely. That was wonderful, Dr. Pranav. Thank you so much for sharing such an amazing real life story of your patient. So, Dr. Pranav, you were mentioning that you had given her some sort of diet, that some foods should be avoided and some should be taken. So could you please give a little more details on what foods should be taken? Because we get a lot of questions कि हमको तो डॉक्टर ये भी मना कर देते हैं, ये भी, तो हम खाएं क्या? बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके उस चीज पे कंसर्न रहते हैं कि अगर मैं ये भी बंद कर दूं, ये भी बंद कर दूं, तो ऐसे कौन सी न्यूट्रिशन जो फूड है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ? So can you please guide them on that? Sure. The very important thing is the food that is very light to digest. All the vegetables can be taken, the cereals can be taken, moong can be taken, rice can be taken. Whatever is heavy to digest should be probably avoided. Fruits are very good, they can be taken. Preferably try to avoid whatever is raw, that should be avoided. Spices can be taken according to their need or according to their choice. Spices can be added. Try to avoid heavy stuff. Try to avoid milk. Try to avoid wheat. Try to avoid non-veg stuffs unless and until they are having a good appetite. Try to avoid fermented stuffs like idli, dosa, dokla,
dahi should be avoided because it creates more of acid in the body, or it can more create acidity in the body. So maida, like pav bhaji or something like that, should be totally avoided. And in children's, preferably they have उनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है. And the thing is, उनको ज़्यादा कफ की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए ऐसी जो भी चीजें जो कफ को बढ़ाने वाली होती है, जैसे मीठा हो गया, चाहे चॉकलेट हो गया या दूध हो गया, इसको इनिशियल स्टेज में अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो पूरी तरह से बंद करना एडवाइजेबल होता है. तो ऐसा है डॉक्टर प्रणव, उन्होंने you just said very important things actually, is that initially when people have trouble, because a lot of children, they say, oh my god, if we have to stop this, then what will we eat? The parent will say, oh my god, anyways he's not eating anything except the chocolates and the junk food. Now if I stop that, what will he eat? He will only be starving. But the truth here hai कि when you do the right diet, you stop the things which are producing toxins initially, the appetite is then increased. And after few months, when they are having natural appetite and they are asking for food, at that time, sometimes when you give little bit here and there these things, then it will not be so bad. So that's what is like. Initially you have to build it up so that they can handle the junk food. Although I am completely against the junk food, and I believe most of the children, when I talk to them in the clinic, they will say, oh, we don't want, my mom is giving. क्योंकि मॉम को लगता है ये कुछ तो खाए. लेकिन सच बताती हूँ, जब उसको खुद भूख शुरू हो जाएगी सही चीज करने से, तो वो सब खाते हैं, उनको कोई ऐसा है नहीं. तो दैट्स, एंड बिकॉज एपेटाइट नहीं है, इसलिए उनको वो मुंह में, हम बोलते हैं ना मराठी में, चाव नहीं, मतलब वो स्वाद नहीं ना, तो उनको फिर वो सब चीजें चाहिए जो एटलीस्ट कुछ तो बुरा स्वाद नहीं लगे, बस दैट्स इट. सो अब हम बात करते हैं थोड़े से होम रेमेडीज के बारे में. Yes, Dr. Smita, I was coming to that part wherein so because पहले जैसे डॉक्टर प्रणव ने हर्बल रेमेडीज के बारे में बताया, बट कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें इतने छोटे एज में उनको हर्बल रेमेडीज से चालू नहीं करना है. तो बहुत से पेरेंट्स आके पूछते हैं कि होम रेमेडीज ऐसी कौन सी हम घर पे ही अपने बच्चों को दे सके. एंड डॉक्टर स्मिता, आपकी होम रेमेडीज तो वर्ल्ड फेमस है, तो प्लीज गाइड द पेरेंट्स टुडे हु आर वाचिंग विथ योर वंडरफुल इफेक्टिव किचन सीक्रेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आनंदी, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेदिक और स्पेशली आयुष शक्ति दवाइयां जो है वो इतने सेफ है कि 1-2 महीने का बच्चा भी ले सकता है. जैसे कि मेरा बेटा, जिसको जब बॉर्न हुआ था कि उसको हेपेटाइटिस हो गया था, तो मैंने लिवटॉन सिरप, जो मैं सबको, हम बच्चों को देते हैं हेपेटाइट के लिए, उनका भूख बढ़ाने के लिए, वो उसको सिर्फ मैंने 2 दिन की उम्र में ही 3-3 ड्रॉप दिया था. उसके बाद उसे 4 महीने की उम्र में बहुत जबरदस्त अस्थमा एंड वीजिंग हुई थी, बिकॉज ही इनहेरिटेड दैट फ्रॉम हिज फादर. तो उस समय मैंने उसे अपना कफनो और डी वायरस सिरप तब से शुरू कर दिया. तो अपनी जो आयुष शक्ति की दवाइयां जो है ना, वो बहुत सेफ है, क्योंकि हम एकदम इंटरनेशनल तरीके से उसका क्वालिटी कंट्रोल, वी आर डूइंग क्वालिटी कंट्रोल इन अ वेरी इंटरनेशनल मैनर, एंड दे आर वेरी वेरी सेफ. But before that, but at home you can do this. Go back to the home remedy. I want to finish it. Then we go to the medicines. So at home they can still do this little home remedy if the problem is not severe. So you can take a ginger juice, fresh ginger juice. You can take it and you can add some rock salt, a little bit of rock salt, and mix it with little water, so it's not very spicy for the child and it becomes a bit tasty. And just let him drink it, a 1/4 teaspoon of this mixture before food every time. That will actually improve the appetite and it will reduce cough as well. It's a very simple home remedy, but it is really powerful. You can then give this. Yeah, you wanted to say something, Anandi? No, ma'am, I was just saying that there are a lot of people asking to repeat the home remedy, but I just wanted to tell them that we are going to post this video on YouTube also, and on our comment section also, we will share the home remedy that was shared by Dr. Smith.
So, Dr. Smita, you were saying something about the medicines that some Sumida Prashan and D-Viro that you had also given to your son when he was suffering through Yeah, something this at is the age of... actually very popular among the world, not only India, but all over the world. I've got several moms, even from Europe, who told me that when they give this Sumeda Prashan drops just once a month on a Pushya Nakshatra day, uh, their children actually stopped getting frequent fever, etc., and the appetite was improved. It's a general kind of a protection for the child, very safe. And then Dr. Pranav was actually talking about the worms. Some children, they have worms. And even if they give deworming tablets, it keeps coming back again and again. So there are some formulas of Ayush Shakti, which is like Suyog, uh, which is actually naturally creating immune system of your child's own immune system, so that it will fight the worms by itself and it doesn't keep recurring so often. Then Livton syrup, of course. Asmita, would you like to show Livton syrup and all that pictures? So Livton syrup is one thing that Dr. Pranav already spoke about. I gave it to my son when he was just 2 days of age, because he had a little, postnatal like child. When he is born, many children, they get naturally some jaundice. He had a bit more, so I just gave, and immediately it went away in 3 days. So Supachak is something that is, anybody can take it and increases appetite. And then you can give also, if you have the, we describe 2 kinds of situation where the appetite goes away. One, where the child is not fed in a right manner, like Dr. Pranav said, and because of that, your appetite is killed. The child, बच्चे को फिर भूख नहीं लगती, क्योंकि उसको बार बार जबरदस्ती खिलाते रहते हैं भूख के बगैर, तो फिर उसकी भूख मर ही जाती है और उसको खाने के लिए एकदम से वो हो जाता है कि नहीं, ये तो बहुत जबरदस्ती करके खिला रहे हैं तो नहीं खाना है. और दूसरा है कि जहाँ इम्यून सिस्टम वीक होकर के बार बार कफ कोल्ड और के एपेटाइट चली जाती है, फिर एक बार एपेटाइट आई कि वापस वही फीवर की वो साइकिल, फिर वापस एपेटाइट चली गई 2-3 हफ्ता. सो उस स्थिति में, पहले वाली स्थिति में लिवटोन सुयोग देते हैं हम, और ये जो सेकंड स्थिति मैंने बताई उसके अंदर हम उसे डी-वायरो सिरप, कफानो सिरप देते हैं, which is very, very powerful and very effective for boosting the immune system and really, really preventing frequent cough, cold, and allergies. Very rightly said. Thank you so much, Dr. Smita, for sharing your own personal experience. So, Dr. Pranav, before we move on to the questions that have been coming in, आप कुछ कह रहे थे कि स्पेशली ये लॉकडाउन के समय में बच्चे ज़्यादा लेजी हो गए हैं, तो एक ही जगह पर बैठते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो आप किसी योगा पोस्चर्स के बारे में बता रहे थे. तो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसे कौन से योगा आसन है जो बच्चे घर पे कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो बद्ध कोणासन करके एक आसन होता है, ये यूजुअली हम लोग कर सकते हैं. सेकेंड इज शशांक आसन. तो ये जो आसन है, दिस 2 आसन्स विल इंक्रीज द डाइजेस्टिव फायर. ये डायरेक्टली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है, जो मसल्स होते हैं पेट के उनको स्टिमुलेट करता है और डाइजेस्टिव फायर इससे इंक्रीज होता है. और एक चिन्मय मुद्रा करके एक मुद्रा होती है, दिस इज फॉर दिस रिलैक्सेशन, गेस्चर ऑफ अवेयरनेस इसको बोलते हैं. तो ये भी कर सकते हैं, जिसको ध्यान मुद्रा भी हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं. तो इससे करके, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब भी बच्चे अगर खाना ढंग से नहीं खाते हैं तो उनके अंदर जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल्स यूजुअली या तो कम हो जाते हैं, या फिर वर्म्स की वजह से भी जो भी खाते हैं वो उनका सारा न्यूट्रिशन जो है वो वर्म्स ले ले. तो उनके अंदर बॉडी में वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा एनर्जी होती नहीं है, तो फिर वो चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें. एक लो एनर्जी की वजह से भी चिड़चिड़ापन आ जाता है. तो इसके लिए एक मन को शांत करने के लिए एक मुद्रा करना भी इनको फायदे का होता है. और दूसरा आसन जो होता है वो
definitely to increase the digestive fire directly. एक होता है सूर्य नमस्कार जो जिसको हम सन सैल्यूटेशन भी करते हैं, तो ये तो यूजुअली हम सभी जानते हैं कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार। तो इससे भी काफी, ये तो मतलब पूरे मतलब बॉडी के लिए, नॉट जस्ट डाइजेशन बट द होल ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी के सारे मसल्स जॉइंट्स जितने भी है सबको फिट रखने के लिए सूर्य नमस्कार इज द बेसिक एक्सरसाइज हम लोग बोल सकते हैं। इसको हर कोई कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई कर सकता है। बिल्कुल, thank you so much, Dr. Pranav. So friends, if you have missed out on any of the information that was shared by Dr. Smita and Dr. Pranav, we will post this live on our YouTube channel as well. So you can go and subscribe there and try out the home remedies and the lifestyle diet recommendations and yoga suggestions given by our expert doctors, and do let us know if it worked out for you. So Dr. Smita and Dr. Pranav, we've received quite a lot of questions on from Instagram and Facebook as well. पर मैंने तीन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को जॉट डाउन किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर स्मिता, बहुत सारे पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू आई इंक्रीज द हंगर इन माय चाइल्ड बट नेचुरली विदाउट गिविंग एनी हार्श मेडिसिन्स। सो हमने वही सारी बातें की है। तो जैसे मैंने बताया, डॉक्टर प्रणव ने बताया था, दो ही चीज करके हो सकता है। एक, यदि वो बच्चे को एपेटाइट इज किल्ड बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, यू नो, and it's like a cycle, you know, that there is a fever, cough, cold, and for 2-3 weeks the appetite is gone. Then once the appetite is it's just coming back, and again there is a fever and it kills the appetite again. If that is the case, then very important to boost the immune system. So that, I think, you know, you have to give some natural medicines only with the what you call diet and a home remedy. It may not work. I mean, simple thing like tulsi, the basil juice, ginger juice with little turmeric mixed with honey can increase the immune system, but still, you know, you need little bit more stronger and powerful things. So that's what I recommend. And if it is not because of that, but because many other reasons, you can always come and see our doctors. But I have given the plan here already that, you know, when the child is not having appetite, start giving light food, very light food, like Dr. Pranav and also I said in the beginning, because he's not able to handle the food. So don't just force anything. Just give light food, like soup also is okay, so that the body will process the toxin, and after a few days, the child will start asking for food like anything. First, you would be behind the child and ऐसे ऐसे करके घूमते रहेंगे उसके पीछे पीछे खाना लेके, you know, सीन होता है ना, बच्चा भागता है और माँ पीछे खाना लेके भागती है। फिर उसको यदि आप लाइट खाना दिया और जब भूख लगी तभी दिया, ऐसा एक 2-4 हफ्ता किए करेंगे ना, ट्रस्ट मी, वो आपके पीछे खाना लेके भागेगा, लाओ मुझे खाना दो, आपके पीछे वो दिमाग खा लेगा, और खाना 5 मिनट लेट हुआ ना तो आपकी जिंदगी हराम कर देगा. That's what will happen. So just go step by step. Don't have any hurry, because hurry produces worry. So very rightly said, Dr. Smita. And I think हर parent का वो एक ideal situation है कि बच्चा खुद आके खाना मांगे. Actually मैं बोलूँ आपको, क्योंकि मैं खुद माँ रह चुकी, इसलिए पता है. मेरा बेटा आज भी इतना बड़ा हो गया ना, फिर भी मुझे ऐसे ही लगता है वो कम ही खा रहा है. ट्रस्ट मी, हर माँ को यही लगता है कि मेरा बेटा कम ही खाता है. वो उसको कैसे भी करके उसको खाना खिलाना चाहती है, वो प्यार है माँ का. बट क्या होता है कि कई बार वो प्यार थोड़ा नुकसानकारक, क्योंकि उसको भूख नहीं है, तो फिर उसको एक काम करो, बहुत लाइट चीजें खिलाओ. ऐसी चीजें खिलाओ जो भारी नहीं है. दूध, गेहूं, तली हुई, उससे थोड़े समय दूर रखो. मैदे की चीजों से दूर रखो. जैसे कि पोटैटो चिप्स तो ऐसी चीज है जो घर में बनाई तली हुई दे सकते. क्यों? क्योंकि उसमें मैदा नहीं. ग्लूटेन इज अ वेरी बैड थिंग. सो उस तरीके से जैसे पकोड़े है तो अपने बेसन के, तो उससे उसको इतना नुकसान नहीं होगा. पर फिर भी शुरुआत में लाइट खाना देना चाहिए एकदम से. तो वो खिलाओ ना, तो वैसा करो. मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि हर माँ जो है वो खाना ना खिलाना मतलब वो तो सजा है माँ के लिए. वो तो माँ का प्यार है ना.
ऐसे बाजू में बिठा के खाना खिलाना, यानी कितना कितना अंदर से कितना प्यार मिल लगता है बच्चे को और माँ को. दैट्स द मोमेंट ऑफ लव. वो हम बंद नहीं करना चाहते, पर उसको हम स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहिए ना बाय जबरदस्ती उसको ठुसा के. तो लाइट चीज दीजिए एंड धीरे धीरे फिर आपको जो बहुत उसको खिलाने की इच्छा है ना, अच्छा अच्छा, जैसे आज भी मुझे बहुत मन होता है, 21 साल का हो गया मेरा बेटा. आई वांट टू फीड हिम नाइस फूड ऑलवेज. फिर थोड़े दिन के बाद बोलता है मम्मी यार मेरा पेट बढ़ गया, अभी तो बंद करो. Thank you so much, Dr. Smita, for sharing your experiences. And I hope जिन्होंने ये question पूछा, like Dr. Smita said, कि अगर आपकी condition severe है तो you can always come and visit Ayush Shakti doctors. उनका details मैं आपको live के end session पे दूंगी. So Dr. Pranav, next question is, how can I get my child to taste and try new foods? Yeah. So usually ऐसा होता है कि जो हेल्दी फूड होता है वो बच्चों को पसंद नहीं आता है, और जो स्पाइसी या जो जंक फूड है वो यूजुअली पसंद आते हैं. सो आजकल तो यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं. लॉकडाउन में भी काफ़ी लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए जहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लोग नए नए रेसिपीज बना रहे. तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी हेल्दी फूड्स हैं उन सबकी नई नई रेसिपीज उनको बना के खिलाइए, ताकि अगर समझो कोई सब्जी एक कोई भी व्हाटएवर, चाहे भिंडी की सब्जी अगर नहीं खा रहे तो किसी और तरीके से बना के खिलाओ, उसका कुछ और अगर बनता है तो खिलाओ. या समझो रोटी नहीं खा पा रहा है अगर, तो उसका कुछ थेपला बनाओ या ऐसा कुछ कुछ तो भी अलग बना के उसको खिलाओ. उसके अंदर स्पाइसेस भले ज़्यादा डालो, व्हाटएवर ही लाइक्स, जो भी उसको अच्छा लगता है, लेकिन जो हेल्दी हो और जो घर पे बना हो, ऐसी ही चीज़ें उसको खिलानी है. तो उसको एक टेस्ट उसमें चेंज आ जाएगा. कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता. कोई चीज़ ऐसी होती, मान लीजिए करेले की सब्जी है, अब कड़वा है तो खाएगा नहीं, लेकिन अगर उसको एक कुछ अलग तरीके से अगर समझो गुड़ अगर ज़्यादा डाल दिया उसमें और खिलाया तो खा भी सके. तो ऐसा कुछ ना कुछ ट्रिक्स माओ को करना पड़ता है, उसके बाद ही बच्चे खाएंगे, ये तो नहीं खाते. तो दिस इज ओनली आई वुड लाइक टू टेल दैट फाइंड सम न्यू ट्रिक्स टू do that thing. And the most important thing is, unless and until he is having appetite, unless and until he feels hungry, don't give him food. Once he feels hungry, he will eat whatever you give him. Whatever homemade food you give, he will eat it. That's the basic thing that everyone should understand. या और अपना तो स्वास्थ्य शक्ति रेस्टोरेंट जो मलाड क्लिनिक में चलता है, उनके तरफ से हम इतनी सारी रेसिपी तो आयुष शक्ति के ही सारे यूट्यूब और सब जगह पे ये आनंदी को ज्यादा पता, वो लोग ही करते हैं. बट तो आप हमारे पेज पे ही आके देखेंगे तो इतनी रेसिपी मिलेगी, पूछो नहीं. बट लेट अस हैव अ सीरीज ऑफ रेसिपीज फॉर द चिल्ड्रन, दैट इज व्हाट आई रिकमेंड. और अगले 1 महीने तक हम थोड़ी थोड़ी रेसिपीज चिल्ड्रन के लिए डालेंगे जो हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी, तो स्वाद और शक्ति दोनों आ जाए यहाँ पे. Yes, Dr. Smita, very rightly put. And like Dr. Smita mentioned कि हम अपने YouTube चैनल पे every week एक नई रेसिपी अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी नए रेसिपी के आइडियाज ले सकते हैं जो हेल्दी हो, जो आयुष शक्ति वे में बनती है. जैसे डॉक्टर्स आपको पर्सनली रिकमेंड करते हैं कि ये चीजें ना खानी चाहिए, तो जो आयुष शक्ति वे में प्रिपेयर होती है वो रेसिपीज आपको मिल सकती है. So, Dr. Smita, there's this one comment on our Facebook Live जो हमको आया है from Joanne Rodrigues. So she says, "Hi, Dr. Smita, you said that if children have worms and it keeps recurring, then which medications can be taken and also to increase immunity in children? Because of that IQ level कम हो जाता है, बच्चे पतले हो जाते हैं, तो what medications would you recommend?" Wonderful, Joel. That is a wonderful question, actually. So I request Asmita if she can just put the slide of our medicines, actually, quickly, if you can pull out. So one thing that we give, which is known as Suyog. So this is actually for the immune system. If you look at D-Viro, it has a Tinosphaera cordifolia, which is giloy in Sanskrit language, and other 5 very powerful herbal formulas, decoctions,
very much boosting. I gave it to my son, and he came out of the wheezing and breathlessness completely. He never had it actually. And Kafano syrup is for cough. So that's for those immune system. And then you can use Suyok, which is a formula for worms. And I have given it to all the children who gets recurring worms actually. And deworming tablets are like giving some temporary relief, and then comes back in maybe 6 to 8 weeks again. So, Asmita, would you like to show the picture of Suyok? Ma'am, I think we lost Asmita, but never mind. We will share the images, and we'll also share the medications that Dr. Smita just suggested in the link on our live and also in the comment section. So thank you so much, Dr. Smita and Dr. Pranav. This was quite an amazing and informative sessions. I'm sure that a lot of parents and a lot of friends and family must have taken back a lot of different ways to look at the situation. Like Dr. Smita and Dr. Pranav enlightened us about various situations that one must avoid when they are dealing with low appetite. So thank you so much for joining us on our live session today. I hope you all must have taken back amazing health tips like I did. Keep writing to us and keep letting us know what our live sessions should be about. So you can reach out to us, you can book appointments for our expert doctors from our India toll-free number, that is 1800-266-3001. If you are not from India, you can reach out to us on our global toll-free number, 1800-2800-906. You can also WhatsApp us on +91 7777 001561. If you want to suggest us on what our next live sessions should be about, and if you have any queries, you can email us on info@ayushakti.com. The medications, the naturally prepared medications that were mentioned by Dr. Smita and Dr. Pranav are available on our website, that is www.ayushakti.com. Don't forget to follow us on our Instagram, Twitter, YouTube, and of course, Facebook to get daily updates on what is happening in the current situation. Thank you so much for joining us. Stay home, stay safe, and namaskar.